तो स्टूडेंट्स कल लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में, जिसमें हमने बात किया था डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम के बारे में, है ना। हमने देखा था कि देयर इज ट्राइसोमी इन डाउन सिंड्रोम एंड इन क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम व्हाइल द मोनोसोमी टेक्स प्लेस इन द टर्नर सिंड्रोम। ट्राइसोमी में क्या हुआ था, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया था, 2n+1 हो गया था, और मोनोसोमी में क्या हुआ था, एक क्रोमोसोम कम हो गया था। तो हम जानते हैं कि जब एक भी क्रोमोसोम कम हो जाता है या बढ़ जाता है तो इससे बहुत ही डेंजरस डिसऑर्डर्स जो हैं वो हो जाते हैं, जिनको हम इन डिसऑर्डर्स को हम जानते हैं कि ये ह्यूमंस में डिसऑर्डर हो जाते हैं, और इनके बारे में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। So today we'll be talking about the next chapter, which is the chapter 6, and the name of the chapter is Molecular Bases of Inheritance. It is basically a part of biology which is known as molecular biology, and also it is very important for your examination as well as competitive examination purpose. So students, today we'll be talking about the molecular basis of inheritance. Now, what is the meaning of molecular biology? First of all, we have to talk about molecular biology and what molecular biology is all about. Molecular biology is basically the branch of biology which deals with the biomolecules, and biomolecules include the main biomolecules include the DNA, which is the genetic material, which is DNA and RNA, and in this particular chapter we talk about RNA, we'll talk about DNA, and also we'll talk about the central dogma of molecular biology, which is the backbone of biology. One more thing which we have, which we mention, is central dogma of molecular biology. And what is the meaning of central dogma of molecular biology? The basic meaning of central dogma of molecular biology is, in central dogma, it is known as the backbone of biology. The life is always around the central dogma, move around the central dogma. And what is the meaning of central dogma? The meaning of central dogma is, it is basically summarized three main processes, which include, the first one is, let me suppose this one is a DNA. So the first step is the formation of DNA, new DNA from old DNA. So the first step is the formation of DNA, and if the formation of new DNA from old DNA, and this particular procedure, this particular process, you know that is known as replication. So in this chapter we also talk about replication. So what is the meaning of replication? The formation of new DNA from old DNA is known as replication of DNA. In this chapter we will also talk about how could we say that DNA is a genetic material. So one of the character of genetic material is self-replication power. It means formation of itself. So DNA have the power to form itself, and this process is known as replication. What is the meaning of replication? The formation of new DNA from old DNA. Okay, so now this is the first step of central dogma, and the second step of central dogma is formation of RNA. The second step of central dogma is the formation of RNA. What is the meaning of formation of RNA? When the RNA, as we know that RNA is formed from DNA, and the process in which RNA is formed from DNA, this particular process is known as transcription. So the process of RNA formation, and the RNA is formed from DNA or DNA template
सब डिटेल में हमें आगे पढ़ना है, is known as transcription. Now come to the next one, the third one. Somehow the third process is the formation of protein, and usually the formation of protein, and usually the protein is formed from mRNA. मैंने यहाँ पे mRNA लिख दिया है. So the process of formation of protein from mRNA template is known as the third process, is known as the translation. So whenever we are talking about the central dogma of molecular biology, or the central point of life, or the backbone of life, the backbone of life is replication, transcription and translation process. Okay? In some of the individuals, like in retroviruses, in which RNA act as genetic material, as we know that viruses are composed of only two things. One is the protein covering and other is the genetic material. So if we are talking about the viruses, they have either DNA or RNA as genetic material. If DNA is there, there is no RNA, and if RNA is there, there is no DNA. So the viruses are either the DNA virus having the genetic material DNA, or RNA virus having the genetic material RNA. So in case of virus, in which the RNA act as genetic material, and somehow these viruses are known as the retroviruses. One of the retroviruses, you have to know that AIDS virus is a retrovirus. So in retrovirus, why it is called retrovirus? Because a reverse process of transcription takes place, and the process is known as reverse transcription. What happens in reverse transcription? In reverse transcription, again you have to know that the transcription is the process of formation of RNA from DNA. And what is the reverse of transcription? The reverse of transcription is when the DNA is formed from RNA or mRNA. So when a specific process is there, when RNA can form or RNA form DNA, this particular process is known as, the fourth one is reverse transcription. What it called? Reverse transcription. So what is the meaning of reverse transcription? Whenever the DNA is formed from RNA, which is the reverse of transcription, this particular procedure is known as reverse transcription procedure. Okay? So there are some of the processes which include in the central dogma. Replication is there, formation of new DNA from old DNA. DNA can form DNA. Second one is transcription, in which RNA is formed from DNA. And the third one is translation, in which the mRNA template which have the information given by DNA is translate into a particular molecule which is known as protein molecule. And we, as we know that the protein, the meaning of protein is character. The meaning of protein is character. So the expression of gene always takes place in the form of protein. Everything, every character you have is protein based. It means एक इंडिविजुअल के अंदर जितने भी तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं, सपोज द हेयर आर कर्ली और द हेयर्स आर स्ट्रेट, द कलर ऑफ आई, द कलर ऑफ स्किन ऑल्सो, all are dependent on the protein which is formed from translation. So this is the backbone of life, central dogma. So in molecular biology, we talk about the molecules, the biomolecules, which is very important for life, which include DNA. So in this chapter we will also read about DNA, RNA, protein, the processes of formation of DNA, replication, transcription, translation, the process of RNA formation, the process of protein formation as well. And also
we will have to study as why we call DNA as genetic material, why DNA act as genetic material. So the first topic of this particular chapter is the DNA. So the first topic of this chapter is very important topic, and इस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ आप जानते हैं, that DNA. You also know the full form of DNA. The full form of DNA is Deoxy Ribose nucleic acid. DNA. So now, first of all, we talk about DNA. We all know that DNA is the most important element for life. As we know that the life which makes all of us living, what is life? जीवन क्या है? ऐसा क्वेश्चन आता है कई जगह, फिलोसॉफिकल पॉइंट में जीवन को कुछ और ही बता देते हैं, आत्मा, अंतरात्मा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर हम बायोलॉजिकली लाइफ की समझे, अब ये भी कह सकते हैं कि जीवन क्या है, आप कहें कि हमारे पड़ोसी का बेटा है, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लाइफ की, तो लाइफ जो है, व्हाट इज लाइफ, व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, क्या है ये लाइफ? तो लाइफ को अगर हम समझते हैं तो लाइफ कुछ चीजों का समराइजेशन है। तो लाइफ के लिए, जीवन के लिए, बायोलॉजी के लिए 3 चीजें होना कंपल्सरी है। The most important 3 things for life. The first one is the genetic material. For life, everyone needs genetic material, and we know that the genetic material, और इसको मैं अभी फिलहाल genetic material को मिटा के I will write here nucleic acid. Okay, so nucleic acid ही जो है वो genetic material की तरह काम करता है. The first thing first, which is necessary for life, is the nucleic acid. And we know that there are 2 nucleic acids present. One is the deoxy ribose nucleic acid, and another one is the ribose nucleic acid. DNA and RNA is there. So the most important thing which is required for life is the genetic material or nucleic acid, which include DNA and RNA. The second most important thing for life is the protein, and as we know that protein is the main building block for life. Everything in our body is usually, almost everything is made up of protein. Each and every cell contain proteins. The cell membrane, the mitochondrial membrane, the nuclear membrane, all are made up of proteins. So protein is a very, very essential component for life. So for life, what we need nucleic acid, DNA, RNA, protein, and the third one is the carbohydrate. So these are the 3 basic things required for life. जहाँ पे ये तीनों मिल जाए, उसी का जीवन नाम है, उसी की लाइफ नाम है ना? So जहाँ पे ये तीनों मिल जाए, कौन तीनों? न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स. All 3 are chemicals, all 3 are biomolecules, and somehow these are known as the macromolecules. You can call them the macromolecules. Macro means large, and the largest known macromolecule is the DNA.
molecule. So the largest known macromolecule is DNA. Okay? What is the largest known macromolecule? The largest known macromolecule is DNA. Now, the next one is RNA, and then we talk about the protein. So we are talking about DNA right now. So DNA is the largest known macromolecule. The DNA is made up of three basic things. अब DNA को भी अगर आप देखेंगे तो DNA का फॉर्मेशन भी जो हुआ है वो तीन बेसिक थिंग्स से हुआ है, ठीक है। तीन चीज़ों से मिलकर DNA बना है। क्या है ये तीन चीज़ें? अगर हम तीन चीज़ों की बात करें तो द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द बेस, बट इट इज नॉट द गोवर्धन तिवारी राजकीय चिकित्सालय बेस जो कोविड सेंटर बना है आजकल, वो नहीं। दीज आर कॉल्ड नाइट्रोजनस बेसिस और न्यूक्लियो बेस, नाइट्रो बेस, हम कुछ भी इसको बोल सकते हैं। ओके, सो बेसिस। द सेकेंड वन इज sugar, and the third one is phosphate. So the DNA is made up of three basic things. What are the three basic things required for the formation of DNA? Is bases, sugar, and phosphate. The bases are nucleobases or nitrobases. Nucleo because they can form nucleic acid DNA. Sugar is a very specific sugar which is known as pentose sugar. Sugar is pentose, and the meaning of penta means 5. It means pentose sugar contains 5 carbon. A 5 carbon sugar is there, pentose sugar is there, and the name of the sugar is, you all know, Deoxy ribose sugar. So in DNA, nucleo or nitro bases are there. There are some sugar also, pentose sugar, and the type of pentose sugar which is present in DNA is deoxy ribose. And in RNA, ribose sugar is there. What is the difference between deoxy ribose and ribose sugar? There is basically a simple difference between deoxy ribose and ribose sugar is that in this we have to write D. D means hatana, oxygen from the ribose sugar. So ribose is a 5 carbon sugar in which each of the carbon also contain oxygen molecule, and from the second carbon if we can remove the oxygen it will form the deoxy ribose. तो सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है तो वही राइबोस शुगर डीऑक्सी राइबोस में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर नहीं होता है तो वही राइबोस जो आरएनए में शुगर प्रेजेंट होगी। सो इट इज मेड अप ऑफ बेसिस, न्यूक्लियो और नाइट्रो बेसिस, द शुगर विच इज पेंटोस डीऑक्सी राइबोस इन विच the 5 carbon sugar, in the second carbon the oxygen is removed, and the third one is the phosphate group. The bases are again of two main types. One is known as purine bases and the second one is known as pyrimidine bases. So there are two types of bases which is known as the purine bases and the pyrimidine bases. So purines are there and also pyrimidines are there. Purines, the purine and pyrimidine is usually different in their structure. Purines usually have double ring structure while pyrimidines have a single ring structure.
So purines include again, purines are of two main types. The first one is adenine, which is indicated as A, capital letter, capital A, and the second one is guanine, which is represented by G, capital letter G, while the pyrimidine are again of two main types in DNA. The pyrimidine which is present in DNA are of two main types, which include the thiamine and cytosine. So the thiamine is indicated as capital T, while the cytosine is capital C. So there are four nitrogenous bases present in DNA, which include the purines and pyrimidines. Purines include adenine and guanine, while pyrimidine includes thymine and cytosine. And the difference of purine and pyrimidine is in their structure, double ring structure and single ring structure. Okay. So in DNA there are four bases present. ये वैसे अब इसमें अपडेट हो चुका है, लेकिन अब आपको CBSE के अकॉर्डिंग ही पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए हम फोर बेसिस की बात करते हैं। वैसे इन जनरल अब 6 और नई बेसिस का पता चल चुका है, तो अब 6 बेस हो चुके हैं DNA में जो नोन बेसिस हैं रिसेंट रिसर्च के हिसाब से। लेकिन फिर भी आप लोगों को फिलहाल केवल इन 4 बेसिस के बारे में ही बात करनी है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। सब लोग इनके बारे में जानते हैं। ओके, सो हमने कहा डीएनए क्या है भाई? डीएनए लार्जेस्ट नोन मैक्रोमोलिक्यूल है। डीएनए बेस, शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बनता है। एक और टर्म जो हम डीएनए के लिए यूज करते हैं कि हम ये कहते हैं व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड chain from the tight surface. So DNA is act as a polynucleotide chain. Now again come to the name. हमेशा ये कोशिश कीजिए कि नेम का मीनिंग समझ जाए, आधी बात तो वहीं पर खत्म हो जाती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, चेन तो आप जानते हैं, गाना भी था चेन में, मेरा चेन वेन सब कुछ ला, लेकिन आपको गाना नहीं सुन रहा है। सो द मीनिंग ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉली? द मीनिंग ऑफ पॉली इज मेनी। इन डीएनए देयर आर मेनी न्यूक्लियोटाइड। नाउ अनदर नेम इज न्यूक्लियोटाइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड? लेट मी सपोज देयर इज अ बेस, ओके, and when the base is mixed with sugar or the sugar is associated with the base, the structure formed is known as nucleoside. First thing first is formed nucleoside. पहले न्यूक्लियोसाइड हुआ, फिर टाइड हुआ। So when the sugar is added into the base, it will form nucleoside. Now, what happens if a phosphate is also added? The third component is phosphate. So, if the phosphate is added into the nucleoside, it means if nucleoside is associated with the phosphate, they two together form the nucleotide. So what is the meaning of DNA? DNA is polynucleotide chain. And what is the meaning of nucleotide? Nucleoside plus phosphate. Or we also can say if the base plus sugar plus phosphate, तीनों को भी जोड़ दीजिए,
क्योंकि बेस शुगर में न्यूक्लियोसाइड बनाया था, तो बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट तीनों जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। एंड व्हाट इज डीएनए, पॉली न्यूक्लियोटाइड। ऐसे बहुत सारे हजारों लाखों न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं। डीएनए की लेंथ जो होती है, ये लार्जेस्ट नोन मैक्रोमोलिक्यूल है। हमने कहा था आपसे डीएनए की इतनी लेंथ है, एक डीएनए की इतनी लेंथ है कि अगर उसे पूरी तरीके से अनकॉइल कर दिया जाए, लेट बी सपोज एक ह्यूमन के अंदर जितने डीएनए है उसे अगर अनकॉइल कर दिया जाए और उसको अनकॉइल करके आप अर्थ से मून को लपेटने लगे, तो हम अराउंड 1500 टाइम्स, 1500 बार अर्थ और मून को लपेट सकते हैं। इतना डीएनए एक ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट है ना। अगर आप सन तक जाना चाहें तो हम 10 to 15 टाइम्स सन तक भी पहुंच सकते हैं, 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स के आसपास भी, है ना। यानी कि 1500 टाइम आप अर्थ से मून, मून से अर्थ आ सकते हैं। इतना डीएनए एक 5 to 6 फीट के 6 फुट के आदमी के अंदर होता है ना। तो इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, तो इसमें मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो है एसोसिएटेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। एंड हाउ अ डीएनए चेन इज फॉर्म, लेट मी सपोज दिस इज base, this is sugar, this is phosphate, let me suppose this one is the first nucleotide, the another nucleotide is there, and these two get formed dinucleotide, then another nucleotide is there, trinucleotide and so on। इसी तरीके से मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे तो एक डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो बन जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। सो व्हाट इज डीएनए, डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा इसका। नाउ व्हाट इज द बैकबोन ऑफ डीएनए, ओके, इट इज usually double stranded. DNA is usually double stranded. There are two strands. One strand is this and another strand is this. So usually the DNA is linear present. The DNA present is linear DNA. This type of DNA is there. It is known as the linear DNA. While in case of prokaryotes, circular DNA is present. In case of eukaryotes, linear DNA is present, while in case of prokaryotes, a circular DNA is there. The DNA is not linear, but the DNA is circular. So, as we know that except bacteria, all the living individuals are eukaryotic right now. So, the main DNA is the linear DNA. And in this linear DNA, there are two strands. ये दो आप देख रहे हैं ना, दो पट्टियों से मिलकर बन रहा है, दो स्ट्रैंड से मिलकर बन रहा है। वन ऑफ द स्ट्रैंड हैव द पोलैरिटी 3:5 एंड अनदर वन हैव द पोलैरिटी 5:3। 3 प्राइम, एक स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर दिखेगा और दूसरा स्ट्रैंड आपको हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर दिखेगा। ये जो ये पोलैरिटी है तो इसी को हम बोलते हैं एंटी पोलैरिटी। Anti-polarity is there, or somehow we can also call it antipolar strands. So the strands of DNA are always antipolar. What is the meaning of antipolar? One of the strands run in the 3:5 direction and another one in 5:3 direction. Okay, so if two strands of DNA are there, let me suppose two strands of DNA are there, one strand is this and another strand is this, they are always anti-parallel. Okay, so if this one is 3 and this one is 5, so this one is 5 and this one is 3. So एक स्ट्रैंड जो है वो 3 से 5 की ओर रहेगा और दूसरा स्ट्रैंड हमेशा 5 से 3 रहेगा। 3 के सामने 3 और 5 के सामने 5 कभी नहीं आएगा।
फिर वो पैरेलल स्ट्रैंड हो जाएंगे। डीएनए में कभी भी पैरेलल स्ट्रैंड नहीं पाए जाते, एंटी पोलैरिटी होती है। एंड 3 के ऊपर एक डैश ऐसे प्राइम बोलते हैं, सो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डीएनए में केवल ये 3 और 5 ही क्यों आता है, 1 2 4 बाकी नंबर्स क्यों नहीं आते? देयर इज अगेन अ रीजन इज द शुगर। लेट वी सपोज शुगर कौन सी है डीएनए में, डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस कैसी शुगर है, पेंटोज। पेंटोज शुगर का मतलब क्या होता है, 5 कार्बन शुगर। 5 को पेंटा कहते हैं तो पेंटोज। ओज जहां भी लग जाएगा शुगर, जहां ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, हेक्सोज, हेप्टोज, इवन सेल्यूलोज, सब शुगर है ना। सो शुगर के लास्ट में जो नोमेनक्लेचर आता है ओज लग जाता है, ठीक है। एज लग जाएगा तो एंजाइम हो जाएगा, नोमेनक्लेचर भी समझिए। अगर लास्ट में ए ऐसी होगा एज तो एंजाइम, ओ ऐसी होगा तो शुगर। ओके ना, हम बात कर रहे थे एंटी पोलैरिटी में 3 प्राइम 5 प्राइम, ये 3 5 ही क्यों या 5 3 ही क्यों होता है? तो रीजन इज, लेट मी सपोज दिस इज द 5 कार्बन शुगर। स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, स्ट्रक्चर ऐसा होता है, लेकिन मैं समझाने के लिए अभी फिलहाल ऐसा बना रहा हूँ। 1 2 3 4 and 5. Let me suppose this one is DNA, this one is pentose sugar, deoxyribose. Okay, let me suppose this one is the 5 carbon pentose sugar. Okay, कौन सी शुगर है, deoxyribose शुगर है। It have 5 carbons, 1 2 3 4 5। वैसे स्ट्रक्चर ऐसा होगा रिंग स्ट्रक्चर, लेकिन अभी मैं इस रिंग स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली समझाने के लिए समझा रहा हूँ ऐसा स्ट्रक्चर बना। एंड दिस वन इज, लेट अस सपोज द फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। सो जब भी आप डीएनए को देखेंगे तो इसमें जो ये पेंटोज शुगर है डीऑक्सीराइबोस, इसके ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसके थर्ड कार्बन पे आपको मिलेगा एक फ्री OH ग्रुप, OH निगेटिव होगा, ठीक है। और फिफ्थ कार्बन पे यहाँ पे होगा फॉस्फेट ग्रुप, PO3 PO4 फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पे फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा होगा, फ्री फॉस्फेट, और थर्ड कार्बन पे OH जुड़ा होगा। और इसकी वजह से ये 2 पोल्स बन जाएंगे। एक पोल बन जाएगा 3 प्राइम थर्ड कार्बन, और ये बन जाएगा 5 कार्बन। अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर